वेलकम टू ज़ीग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है पावर पैक्ड। ले चलेंगे मर्सिडीज की नई लग्जरी एसयूवी GLC की टेस्ट ड्राइव पर और साथ ही जानेंगे मर्सिडीज बेंज इंडिया के अपकमिंग प्लान्स कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। दिखाएंगे महिंद्रा के न्यूली लॉन्च ट्रैक्टर ओजा और रीसेंट अनवील थार ई एंड ग्लोबल पिकअप में क्या है खास, और साथ ही करेंगे खास बातचीत कंपनी के टॉप मैनेजमेंट राजेश जेजूरीकर से। Audi की लग्जूरियस एंड पावरफुल इलेक्ट्रिक एसयूवी Q8 e-tron और Q8 e-tron स्पोर्टबैक ने ली भारत में धमाकेदार एंट्री। Hyundai Venue का नया नाइट एडिशन और कम्यूटर बाइक 2023 Honda Livo हुई भारत में लॉन्च। और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी तमाम खबरें हमारे सेक्शन न्यूज रील। हेलो एंड वेलकम टू ज़ीग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल और हम यहाँ हम्पी आए हैं। एंड गेस व्हाट, द न्यू GLC by Mercedes-Benz is what we are going to test drive. Remember, this is a car which was unveiled for the global markets almost a year ago और अब ये finally भारत में आ रही है। What's important is that this car is actually the best-selling SUV by Mercedes-Benz India. Now in its second generation, let's find out what's changed in the car. Well, from the outside, क्या कुछ बदला है? Well, as you see the car, पुराने generation से इस generation में you see the car is now much more smoother, softer looking. बहुत aggressive look नहीं है. What's very nice and what I like is the front of the car, जिस पर यहाँ बड़ा logo of Mercedes-Benz which really stands out, makes it very lovely to look at. And अगर हम dimensions की बात करें तो गाड़ी में आपको अब ज़्यादा लेंथ मिलती है, सो इट्स अ लॉन्गर कार दैन बिफोर एंड थोड़ी नैरोअर हुई है एंड लोअर ज़रूर की गई है, बट दैट्स द वे द कार नाउ लुक्स एंड ओवरऑल डायमेंशंस हैव बीन एनहांस्ड, सो इट्स एक्चुअली अ बिगर कार दैन बिफोर. Well, the new GLC will come in two variants. ये वाली है GLC 300 and आएगी GLC 220D, which is the diesel option. So दोनों ही गाड़ियाँ 2 लीटर इंजन से equip होंगी and अगर देखें तो because इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, the boot space is more generous now. Let's take a look. Alright, अब गाड़ी के इंटीरियर्स पर नज़र डाल लेते हैं एंड एज यू एंटर द फर्स्ट थिंग यू नोटिस इज अ वेरी सिमिलर टू द न्यू C क्लास. उसके इंटीरियर से काफ़ी सिमिलर है अगर आप देखें, बट 2 थिंग्स दैट यू इमीडिएटली नोटिस. सबसे पहले तो यहाँ पर जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इट्स वेरी नाइस. इट्स रेक्टेंगल इन शेप और ये आपको 12 इंचेस प्लस का यहाँ पर दिया गया है. साथ ही 11.9 इंचेस का पोर्ट्रेट ओरिएंटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है. टच स्क्रीन, वेरी इंट्यूटिव, लवली टू यूज़, प्रोमिनेंट एंड नाइस ऑन द स्क्रीन. सो आई थिंक इसकी जो पोजिशनिंग है वो बहुत बढ़िया की गई है. सो ओवरऑल द सेंटर कंसोल इज़ वेरी ब्यूटिफुली इंटीग्रेटिंग विद द सेंटर ऑफ द कार एंड यू हैव सम वेरी डिसेंट फीचर्स. यहाँ पर आपका वायरलेस चार्जिंग है, टाइप C चार्जिंग पोर्ट, 2 cup holders and of course you have some space here as well. यहाँ पर भी 2 charging port दिए गए हैं. Some more stuff to keep inside this, lots of space and a big glove box. So space wise काफ़ी generous है. This adds to the overall look and feel of the car. Looks pretty classy and very premium. So looks wise interior definitely आपको C class की याद दिलाएगा, but the way now it overall falls makes the car very, very nice. Well, कुछ इंटरेस्टिंग बातें अगर हम स्क्रीन पर देखते हैं तो यहाँ पर you can choose different modes. Eco mode that you will want to take your car, जब यहाँ पर आपको फ्यूल एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी को चलाना है. Comfort mode, well, the car is for a regular basis. Sports, well, this is a nice mode where the car obviously becomes more fun to drive.
And finally, you can also take this car, being an SUV, on off-road conditions as well. So there is an off-road mode that you can select, and this car then becomes a nice, lovely off-road car. So ये कुछ modes हैं जो आप यहाँ पर select कर सकते हैं as per your choice. The other thing is, यहाँ पर आप जैसे कैमरा चालू कर दें, so you get a lot of nice 360-degree panoramic view of the surroundings, and you can actually select and change as per what you need. So right now जहाँ हम खड़े हैं, हमारे आसपास क्या और कौन सी गाड़ियाँ हैं ये हम देख सकते हैं. We can turn around the car and check out if people are walking around as well. So it's nice, again a lovely safety feature in many ways, where you can see the car from all sides. Even आपके नीचे, when you're driving the car, the transparent feel to what the kind of road surface is under you. So that also is visible through this. So it's very handy and a nice feature we must mention here. Mercedes-Benz GLC, ये नई GLC आपको दो वर्जन्स में मिलेगी. One is the GLC 300 and the other is the 220D. दोनों ही prepared होंगी with the Mercedes-Benz off-road terrain tech. That's what it comes with in terms of its capability. और 2-liter का engine है, which is decent. It gives you enough power and torque. But important bit is that it has an integrated motor, जो कि 48 volts की है, and it gives you an additional 23 horsepower. So there's never a dearth of power in this car. It's actually very nice to drive, takes on the roads very well. Potholes भी बहुत comfortably यहाँ पर absorb करती है. So it's in many ways a good solid SUV you would want to. I have with me Lance Bennett, who's the Vice President Marketing and Sales at Mercedes-Benz India. Lance, good to have you on the show. Just to understand from you, you said there's a lot that's coming in the second half as well in terms of the launches and the new products that you're bringing in. The first half, I want to talk to you about that. I mean, we've seen luxury car sales actually, doing their best ever after a long time. You are the leader in the Indian car market. So, as an industry leader, what's your sense on the luxury car market growing from here? You think this is going to be the same trend that we will see, or there could be, some blips? I mean, how are you reading the Indian luxury car market? Because, we are increasingly global as well, and there are some nations that are facing some issues in terms of volatility, economic slowdown, etc. So, what about Mercedes-Benz India? Yeah. We see a lot of potential in this market, lots of investment from overseas companies, lots of development in the economy, lots of, certainly around my area, I'm seeing a lot of building as well. We see good month-on-month growth in the markets as well, and we want to make sure that we grow with the market as well, and also continue to grow the market. So as a market, India is quite important to Mercedes-Benz, and because we see lots of opportunity and potential in the future. So certainly it's an important market. That's why we're able to bring all these great products to the market as well. Mm-hmm. In terms of your electric vehicle portfolio, we've seen EQS do very well, but how is that panning out? What's your percentage of the EVs in your total portfolio right now, and how do you see that grow? Yeah, so our EV growth has been quite solid. So at this point in time, it's about 4% of our total sales. We have just the two models, so the EQS, as you mentioned, and the EQB, but we plan to expand that range as well in the near future. A few of the next few models that we'll bring will be electric. In addition, we would like to get to 25% of our sales in the next 4 years. That's our goal, and we have a strategic plan that we're working towards to get that as well. So EV growth is growing, and we're bringing cars to the market to meet that market demand. And localization has always been a key pillar to what you've been doing in Pune and Chakan, where your plant is. How much of this car will be, for example, localized? And going forward, what's the plan on the overall localization story, the Make in India story? Yeah, so this car is obviously built in Chakan,
assembled in Chakan CKD. We will continue to look at every other new model that we have and assess whether we can make it locally or whether it needs to be brought into CBU, but our preference is to, as you mentioned, produce as much as we can from our Chakan plant. And, sure. So right now, what's your capacity like, and do you now see the need to expand, and because the volumes are now getting rolling, and you probably will need to maybe look at an enhancement of your capacity. What's it like right now? Yeah, so we've done the planning for the next few years, and at this stage, our capacity will meet our demand. So Until? we sort of next few years is anyway, in terms of investment decisions, we don't need to make any of those decisions right at this point in time, but we're confident that we can cope with the current capacity we have to meet demand in the next And are few you years. exporting anything out of India yet, or do No, you have we're not. plans? No, we're not at this No stage, plans as no. well? No. Okay, all right. So GLC it is. All the very best. Thank you so Thank much you so for your much. time. Lovely speaking. All right friends, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का. Well, ब्रेक के बाद हम आपको ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी तमाम खबरें दिखाएंगे. Well, Mahindra and Mahindra की absolutely new इलेक्ट्रिक आइडेंटिटी अनवील हुई है, और उसी के साथ अनवील हुई है फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक थार. जी हाँ, अगर आपने सोचा कि थार जो कि करंट एग्जिस्टिंग फॉर्म में है उसका इलेक्ट्रिक वर्जन इज़ व्हाट इलेक्ट्रिक थार विल बी, देन यू आर मिस्टेकन, क्योंकि ये गाड़ी अब बहुत अलग, ज़्यादा रगेड, ज़्यादा टफ एंड लवली टू लुक एट. रियली यहाँ पर जो फोकस किया गया है इन द चेंजेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दे आर क्वाइट एंड प्लेंटी. सबसे पहले तो इस पे इंग्लो P1 प्लेटफॉर्म पर ये बनी है. दिस इज़ द फुल इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म दैट यू हैव ऑलरेडी सीन महिंद्रा टॉक अबाउट. इसके अलावा इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो पहले से बेहतर है. ओवरऑल लुक्स, डायनामिक्स मच मोर स्पोर्टियर, मच मोर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ ये गाड़ी लॉन्च होगी. वेल, लॉन्च टाइमलाइंस अभी थोड़े से दूर हैं, लेकिन कंपनी का कहना है जैसी ये इस वक्त दिख रही है इससे बहुत सिमिलर ही रहेगी इन द फाइनल लुक दैट वी विल सी द कार. बट इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स वी नो ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे एडिशंस किए गए हैं टू केटर टू पीपल हु लव टू टेक देयर कार्स फॉर ऑफ रोडिंग एक्शन एंड अ लॉट ऑफ एड्रेनलिन rush. So clearly ये गाड़ी अब not just for India but for the global markets will also get ready, and this is one of the first products on the electric platform that we're talking about from Mahindra that will be rolled out. So a lot of exciting stuff coming from Mahindra and Mahindra, and electric Thar is one of it. Well, as you can see, design language पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है. It's very prominent and stands out is the squarish lamps जो यहाँ पर आपको tail lamps की तरह दिखते हैं, the big spare wheel at the back, and of course the overall dimensions is very, very squarish with the LEDs now that you're getting. So elongated with a long wheelbase with better off-road capabilities. That's the new Thar for you. Well, यहाँ केप टाउन में हमने एक और ग्लोबल अनवील देखा. फॉर द फर्स्ट टाइम महिंद्रा ने अपना पिकअप ट्रक यहाँ पर लॉन्च किया है या अनवील किया है. ऑफ कोर्स इट्स सम टाइम अवे फ्रॉम द फाइनल लॉन्च, बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स नाउ. इट विल लार्जली केटर टू द इंटरनेशनल मार्केट्स. इससे कंपनी अपनी प्रेजेंस इन सम ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट्स बढ़ा रही है. सो इट्स द होल थीम अराउंड मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड दैट दे आर ट्राइंग टू वर्क अराउंड दिस लाइफस्टाइल स्लैश प्रोडक्ट दैट गिव्स यू a nice weekender out, जैसा आप देख सकते हैं. So the looks are very rugged. You have the space, the roof rail where you can store or pack a lot of your adventure sport and really take this product out. In terms of the features, the looks, as you see, काफ़ी sporty, rugged feel to the whole vehicle दिया है. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें rack for storage, LED light bar for better visibility that you get. It's very beefy, very big, bulky. People would like it. In fact, यहाँ पर कंपनी का कहना है they see potential in many markets, be it ASEAN, Australia, India, South Africa, South and Central America. और if you see, it will actually be competing with Toyota Hilux and Suzuki V-Cross, जो कि भारतीय बाजार में available हैं. और मार्केट स्मॉल है, but surely
this is growing going forward. So clearly this is one product that will stand out for Mahindra and works in their whole SUV or the pickup SUV strategy. And this really fits in well there. We'll see when it gets launched, but today was the global unveil. Well, in terms of the features, well, काफ़ी कुछ exciting features इसमें आप expect कर सकते हैं, and that I think people will appreciate, despite it being a lifestyle, rugged vehicle, which is more for a weekender kind of travel. But आप expect करेंगे इसमें, it will get a premium audio system, 5G connectivity, single pane, sunroof that you get, and semi-automatic parking features. So lots and lots of things that are packed in this vehicle for people who are looking for features and technology. Rajesh, thank you so much again for talking to us. सबसे पहले तो the kind of work that's gone in last एक साल में, जब से आपने हमें अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल जर्नी के बारे में बताया था, और आज जहाँ हम यहाँ खड़े हैं with the electric Thar, it's not like a regular Thar जो already market में आती है. It's a completely different vehicle. It looks different, it feels different. So tell us पहले तो ये जो एक साल में इतना सब काम हुआ है, इतना कैसे आपने अचीव किया, and also when is it coming actually for launch in the Indian market? So, Swati, pehle, it's been an exciting day for you, but an exciting year for us. Yes. And today is a culmination of that exciting year. I think a lot has happened in that 1 year. Yes. And I want to just start by kind of showcasing and talking about the products that we showcased last year, right? And last year when you saw them, they were at a very early stage. Today we've been able to share very specific progress on how we are doing on the infrastructure we are creating, either factories or battery testing unit in in Chennai. Also how we are progressing on various elements of the functional image delivery of the product. तो मेरे ख्याल से जो हमारे 4 products नए आएंगे Born Electric, they are all at a very advanced stage of development and running on tracks, prototyping and performing very well. So it gives us a lot of satisfaction. All our teams, I think, have given everything over the last 1 year to make this happen. And on top of that, then new ideas have come out like Thar E, which right now is at a very early stage, like in a way a little similar to where we were last year on the Banbury thing. So it's at a very early stage. We haven't put a date out for Thar E because we need to do more work before we can do that. Likewise, global pickup. So both these are now at early stage, but we thought it's very interesting to share these because the whole electric portfolio or global pickup is critical to go global for our auto business. Well, the exciting part of the trip is also to get your hands on Mahindra and Mahindra's latest lightweight compact tractors. जी हाँ, this is the OJA platform जिस पर 2018 से company has been working on in collaboration with Mitsubishi Japan, and now these tractors are finally here जिनको launch किया जा रहा है. So this is really the global unveiling of a sort. We are getting the first hand of driving these around. Of course, this is just a very small feel to the tractor that has been made. इससे Mahindra की first time entry है in this setup, and it really opens up a huge market potential for the company globally. So this actually gives them entry in ASEAN region जहाँ पर presence almost zilch thi. They were mainly North America market, and through this it is going in Europe, in ASEAN region. So this is going to be a big entry in the tractor space, especially in the lightweight. 20 to 40 horsepower की रेंज की हम बात कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है with lot of focus on the way now these tractors can be applied in terms of the application services that this can give you. Small and sweet and very good looking. So they are cute little things that we will drive around and show you how it feels. Well, Rajesh Jejurikar, as you know, he is the Executive Director at Mahindra Group, also is the CEO at Mahindra and Mahindra Auto and Farm Equipment Business. Am I right to define you? Got that right. Yeah. Okay, finally. Okay. Rajesh, so the tractor, this whole space हमने जो देखा, आपका already presence strong है, but your thought process behind OJA जो आपने आज दिखाया पूरे दुनिया में, made in India for the world, the light compact tractors, very different from the normal image that we have of Mahindra rugged, robust, big, bulky tractors. Yep. उससे हट के आज हम ये देख रहे हैं.
तो इसकी कहानी बताइए। तो ये स्वाति हम लोग ने 2018 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया एंड दिस एक्चुअली डन इन कोलैबोरेशन विद a group company of ours called Mitsubishi Mahindra Ag Machinery Japan, and the Japanese engineers are used to doing lightweight tractors, and they have the Mitsubishi portfolio already lightweight tractors there. So when we decided that we need to create lightweight platforms for the world, that was the best team to work with. Today we are ready with the 3 platforms, which is subcompact, compact, small utility, large utility बाद में आएगा. Okay. So 4 platforms में 40 से ज़्यादा products आएंगे. 2 platform अभी इंडिया में लाएंगे, which is the small which is the compact and the small utility. और ये इन 2 प्लेटफॉर्म में 7 प्रोडक्ट्स हम लोग अभी लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में. When it comes to the launches, आपने कहा कि immediately आप लॉन्च कर रहे हैं 7 products for the Indian market. When will they start rolling out and going forward क्या प्लान रहेंगे लॉन्चेस को लेकर? So actually जो ट्रैक्टर बिजनेस के डीलर्स हैं, we have got all our key dealers here as well, and we are going to this evening do a awards event for the dealer, but tomorrow they're going to come to the same venue. And we are doing the Oja launch for tractor dealers here in the same venue tomorrow. And then we go back and do other launch events in the markets there, and by September we should be in flow. All right friends, वक्त हो चला है हमारे सेक्शन न्यूज़ व्हील में. देखते हैं इस हफ्ते क्या खास रहा ऑटो के वर्ल्ड में. जर्मनी की कार निर्माता कंपनी ऑडी ने भारतीय बाजार में अपनी नई ऑडी Q8 e-tron और Q8 e-tron स्पोर्टबैक को लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत कंपनी ने 1 करोड़ 13 लाख रुपए रखी है. ऑडी Q8 e-tron और Q8 स्पोर्टबैक नई डिजाइन की कारें हैं. नए फीचर्स के साथ ही इस इलेक्ट्रिक एसयूवी के बैटरी की क्षमता भी बढ़ाई गई है. ये दोनों ही कार ज्यादा रेंज और ड्राइविंग का बेहतर एक्सपीरियंस देती है. ऑडी Q8 e-tron में एक 140 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, जो सिंगल चार्ज पर 600 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करता है. Hyundai इंडिया ने भारतीय बाजार में वेन्यू का नया नाइट एडिशन लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 9.99 लाख रुपए से लेकर 13.48 लाख रुपए एक शोरूम रखी है. वेन्यू नाइट एडिशन 3 वेरिएंट्स में आती है. साथ ही कंपनी ने इसे केवल पेट्रोल वेरिएंट के साथ ही अवेलेबल किया है. ये नाइट एडिशन 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन विकल्प में मैनुअल गियरबॉक्स की वापसी का भी प्रतीक है, जिसे पिछले साल फेसलिफ्ट के बाद सिर्फ IMT या DCT के साथ ही बेचा जा रहा था. डुकाटी इंडिया ने नई स्क्रैम्बलर 2G के लिए बुकिंग लेना शुरू कर दिया है, जिसे जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा. स्क्रैम्बलर डुकाटी की सबसे किफायती मॉडल है और कंपनी के पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा बिकने वाला भी मॉडल है. डुकाटी स्क्रैम्बलर 2G को 3 वेरिएंट्स आइकॉन, फुल थ्रॉटल और नाइट शिफ्ट में पेश करेगी. इटालियन ब्रांड ने पहले ही मोटरसाइकिल की कीमतों की घोषणा कर दी है, जिसमें आइकॉन की कीमत 10,39,000 रखी गई है, जबकि फुल थ्रॉटल और नाइट शिफ्ट की एक शोरूम कीमत 12 लाख रुपीस रखी गई है. होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने भारतीय बाजार में लीवो का OBD2 कंप्लायंट वर्जन लॉन्च किया है. कंपनी इसे 2 वेरिएंट ड्रम और डिस्क में बेचेगी. कीमत की बात करें तो नई 2023 होंडा लीवो ड्रम वेरिएंट की कीमत 78,500 रखी गई है, जबकि डिस्क वेरिएंट की कीमत 82,500 एक शोरूम रखी गई है. ऑलराइट, आज के शो में बस इतना ही. आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे. आप हमें ट्विटर, फेसबुक, ईमेल के द्वारा रीच आउट कर सकते हैं. मेरा ट्विटर हैंडल @स्वाति_जैन, इंस्टाग्राम हैंडल @स्वाति_खंडेलवाल_जैन. यहाँ पर आप अपने सुझाव और क्या सवाल हैं ये ज़रूर भेज सकते हैं. तब तक एज ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए. गाड़ी में सीट बेल्ट पहनिए और जब 2 व्हीलर पे हो तो हेलमेट पहनना बिल्कुल भी मत भूलिए. जान है तो जहान है. जय हिंद.